Good morning, class. Today we will take the last segment of the chapter. And till here we have discussed the TMS, that is Tavamasya Sangh, and how they union themselves and rose their voice, and how they got the benefit by the cooperative. We have seen this activity there. Now the creative expression against equality. ये कैसे संभव है, कैसे पॉसिबल है कि कोई भी एक्सप्रेशन इतना क्रिएटिव हो सकता है इनइक्वलिटी के लिए. लेट्स सी. So while some of the protest movements to fight inequality, other might use their pen have also been very active in the fight against the inequality. So often poems, song and stories can also inspire us to make us believe strongly as the issue and influence our efforts to correct the situation. तो कुछ चीज़ें हम कैसे लोगों का अटेंशन ड्रैग कर सकते हैं. तो बेसिकली दिस इज आइडिया टू ड्रैग द अटेंशन टुवर्ड्स यू कैन से द पीपल हु आर फीलिंग अनइक्वल. भाई आप लिख सकते हो, ठीक है, नुक्कड़ नाटक कर सकते हो, आर्टिस्ट तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हो. तो ये सब चीज़ें करके हम लोगों को बता सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज़ ऑफ वीक सेक्शन ऑफ सोसाइटी. जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कई बार नुक्कड़ नाटक वगैरह किए जाते हैं, तो एडवर्टिजमेंट है, समटाइम्स दे टीच अ लॉट टू अस. जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट आर प्रिपेयर, या क्लीनिनेस से रिलेटेड है, तो हम उस तरफ सोचना शुरू कर देते हैं. तो ऐसे ही जब इस तरीके की मूवमेंट ज़्यादा होनी शुरू हुई तो पीपल स्टार्ट थिंकिंग. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके लिए. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसमें इसका प्रोविज़न भी है. द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स और जस्टिस and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all the people are equal. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of the persons, and movements and struggles are equally in India. So continuously refer to the Indian Constitution to make their point about equality and justice for all. So, fish workers in the Tavamasya Sangh hope that the provisions of Constitution will become a reality through their participation in the movement. हो अपना प्रोग्राम एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ा रही हूँ, तो ऑन द सम बेसिस ऑफ रूल रेगुलेशन ना, सो दे फॉलोड कॉन्स्टिट्यूशन. तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बना दिया, लिविंग डॉक्यूमेंट. दैट इज समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइफ, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ लिखा गया है उसको फुली यूज़ कर रहे हैं. सो इन डेमोक्रेसी देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स ट्राइंग टू expand the ideas of democracy and push for a greater recognition and equality and existing as well as new issues. So issues of equality and central of democracy, in this book we have tried to highlight issues that pose a challenge to the ideas of equality in democracy. These you have read include the privatization of health services in the country, increasing the control that business houses exerts in media, and the low value given to the women in their work, and the low earnings made by the small farmers and grow cotton. These issues substantially affect the poor and marginalized communities. So therefore concern economic and social equality in the country. So this is the core struggle of the equality in democracy, the dignity and the self respect of each person. ठीक है, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं सबके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड दैट कैन बी रियलाइज दैट दे हैव educated resource to support the nurture their families, and if they are not discriminated against. ठीक है. आपको बस क्लिपिंग्स में दिया है. ओवर 1500 अटेंडेड द पब्लिक हियरिंग in Lucknow 2001 protest the violence against women. Over 15 cases of violence against women were heard by a jury,
and eminent women who played the role of judges, and this people jury helped the highlighted and lack of support and the in the legal system and the women who seek justice in such cases. तो ये सब चीज़ें जो issues हैं whenever they are discussed in a legal manner, so sometimes whatever the law come that is the beneficial for the welfare of society, such kind of act was made, that is the Domestic Violence Act. So the problem which the faced by women in a family, that is understood and taken care, and on that the law was made. So this chapter finishes here. Tomorrow we'll discuss the NCERT's question and MCQs. Thank you. Have a nice day.